Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today we are going to start our first lecture of mathematics, which is about numbers and arithmetic operations. In arithmetic and numbers and arithmetic operation, we will specifically learn about numbers up to million. Next, we will learn about in place value chart 8-digit numbers occupy the place value of 8-10 millions. मीन्स कोई 8 डिजिट नंबर होगा, अगर 8 डिजिट नंबर अगर हमारे पास होगा तो प्लेस वैल्यू में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब हम उसे लिखेंगे तो वो 10 मिलियन बनेगा. वी विल लर्न अबाउट स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद 1. Further presentation of these two numbers, and next we will learn about the 9-digit number is called 100 million. And last and important point for the presentation, M is stand for the millions. In place value chart, if you will see that anywhere M is written, it means they are talking about millions. Okay, next we will see the place value chart. In place value chart, as we know, families are units, thousand and million. In international number system, million will come after the thousand, and each group further divided into 3 parts. So unit has first part the units, second 10, and next one is 100. For the thousand family, similarly we have 1000, then 10,000, and after it 100,000. And the million family consists on million, 10 million and 100 million. Next, as we have seen here that greatest 8-digit number plus 1 is equal to smallest 9-digit number. Now we will talk about the greatest and smallest numbers. हम सब लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक बेसिक काउंटिंग के डिजिट्स हमारे पास होते हैं, और इस सब में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 9 होता है. अगर हम 9 को 8 टाइम लिख देंगे इकट्ठा, तो ये हमारे पास इस 8 टाइम की सीक्वेंस बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर. आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम लिखा, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है. यही वजह है कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में जस्ट हम लोग 1 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट 9 डिजिट नंबर बन जाएगा. ये वजह है कि हम लोग इसे ग्रेटेस्ट नंबर कहते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर में हमारे पास कम्बिनेशन आता है 0 और 1 का, क्योंकि 0 1 हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर्स होते हैं, स्मॉलर डिजिट्स होते हैं बेसिक काउंटिंग के डिजिट्स में. ओके, नाउ वी विल सी द presentation ऑफ 9-digit नंबर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स. आप लोग राइट साइड से लिखना शुरू कर दें, सिर्फ फर्स्ट यूनिट कॉलम में, देन टेंस में, फिर 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. यही पॉइंट आप लोगों को फर्स्ट में बताया गया था कि अगर हम लोग एक 8 डिजिट नंबर को लेंगे तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 10 मिलियन की इक्वल हो जाएगा. लेकिन अगर हम लोग इसी तरीके से 9 डिजिट नंबर कोई भी लेते हैं तो वो हमारे पास 100 मिलियन की इक्वल हो जाता है. एंड 7 डिजिट नंबर इज इक्वल टू मिलियन, एंड similarly all the numbers have their place values. Okay.